Good morning, dear students. Today we have started the new chapter. That is the chapter number 3. Human reproductive system. Human reproduction chapter नाम रहेगा आपके पास में human reproduction. In case of human reproduction, first of all, the general content will be there. At that content, the human being is dimorphic. Dimorphic means what? Dimorphic means on the basis of morphological content, male and female are completely separate to each other. Male and female. On the basis of external appearance. In other words, we can see just outside looking, we can see that is the male and that is the female, and that nature is known as the dimorphic. For example, male and female on the basis of outer expression, they are the separate to each other. Their looking is different, and that nature is known as the dimorphic. So human being is the complex body structure. In case of complex body structure, the first content number 1, they have the human being is the bisexual, means male and female are the separate. Both are the separated. Male as a male functioning as a male and female is as functioning as a female. Means the male and female gametes are just produced by the separate human being. Now this time we have discussed one by one. In that case means generally the first term will be there. Human में male reproductive system and another is the female reproductive system. So now this time we have discussed about the until today only we discuss about the male reproductive system. The question will be there. Here is the simple aspect is there. What that aspect is there? In case of the male reproductive system, the particular content is there. So first, whole male reproductive system is divided into the 2 parts or the 3 parts also. First, primary sexual organ, primary organ, secondary organ, and external genitalia. Whole reproductive system of मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंप्लीट पार्ट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटल. नाउ स्टार्ट. प्राइमरी ऑर्गन मीन्स देयर इज द टेस्टिज. One pair of testes is there. One pair of testes. Secondary. But the secondary organs are really again classified into the 2 categories. Just you have go through the table also. First, accessory or the secondary. Accessory ducts. Ducts means those parts which are functioning as a tube. And second, accessory gland. In case of accessory duct, first part, rete testige, vas efferentia, epididymis, and next is the epididymis 2. Next is the vas differentia. So all these are the tubes. That's why that are the accessory ducts. First, rete testige. Second, vas efferentia. Third,
epididymis, fourth vas differentia, accessory glands to first seminal vesicle, second prostate gland, and third Cowper glands. Another words we can say that is the bulbourethral, and external genetia is the penis. So first you have to do one thing. Complete male reproductive system is classified in the tabular form. There is the three parts. First, primary organ, second, secondary organ, and third is the external genetia. Primary organ, secondary organ, and external genetia. Three parts will be there. Primary, one pair of testes, we will discuss one by one. And second, secondary organs. In case of secondary organ, first, again secondary organs are classified into the two categories. Number one, accessory ducts, and second is the accessory glands. In case of duct, first, rete testes, second, vas efferentia, third, epididymis, fourth, vas differentia. There is the efferentia and there is the differentia. Accessory glands to seminal vesicle, prostate gland, and Cowper gland, as well as bulbourethral gland. And last part, external genetia. They are again the accessory part, not the necessary. Necessary part is only one, that is the primary organ. External genetia is the penis. So first of all, we have shown the picture, which is the male reproductive system. In case of the male reproductive system, you have just go through the different parts. By that parts, just you can see each and every part in separate form. So, case number 1, there is the part is there. In that part, male reproductive system 2, the thing is primary organ to that part. First of all, you have just go through that. In case of that part, here is the, just we want to clear it. In case of that part, the primary organ. The primary organ is the one pair of testes. The one pair of testes, just they are located outside of the abdominal cavity of the male. And the first determination is based on the male determination is based on the testes. One pair of testes outside of abdominal cavity. And why they are located outside of abdominal cavity? In case of abdominal cavity, there is the one thing is there, that part, because for the decreasing of temperature, 2 to 5 degree or 2 to 3 degree centigrade temperature, and which are required for the maturation of sperm. That's why the testes are located outside of abdominal cavity in all the mammals, but some cases will be there. For example, some mammals, they may be in elephant, that is just percent inside body cavity also. So first part, in case of that part, that is the testes, and after the testes, the one thing is there, between that part of testes is the primary organ. So in that case, what will be happen? Here is the, in case of that part, first that part is the testes. Testes inside part will be content, that is the rete testes. Each rete testes how release the tubes. Just we discuss in test tubes, also not testes. Then that part, first again listen it carefully. First testes, inside of testes, rete testes to the vas efferentia to epididymis, just outside of adrenal part of the testes, a highly coiled tube will be there. That tube is known as the, what that thing is there, then your answer, that is known as the
particular content, that is the epididymis to release one tubes, that is the vas differentia, and vas differentia is open in that particular structure. That part is the one part, that is the seminal vesicle, open into the seminal vesicle, and one thing is there is the seminal vesicle and copular ejecti duct. There is the both part will be open together form, and later on that structure will be just go through that gland, that is the prostate gland, and after then that prostate gland later part will be there, that is the Cowper gland will be there, and all these things will be open. In a previous condition, the particular gland will be functioning, that is the Cowper or bulbourethral gland, and that can be just open through the external genitalia, that is the external genitalia, that is the penis. So that penis is completely muscular organ. So again we have discussed now this time one by one organ. There is the testige. Just go through the structure of the testige. In case of that part of testige, the first thing, just you have just go through the part of testige. One question will be there. In case of part of testige one pair outside of abdominal cavity. Number one pair outside of abdominal cavity, and they have the requirement for the fertility also, because the maturation of sperm, the temperature decreasing required. Case number 3, just the testis is covered by a particular layer, skin-like structure. That part is known as the scrotum. क्या बोलेंगे उसको? Scrotum, outermost skin region, that is known as the scrotum. Really, the movement of testes is must, and the movement of testes will be completed by the scrotum. Protection as well as movement, both are provided by the scrotum. Next is, each testes contain that type of the lobes. I mean, each testis nearby 250 lobes are there. That lobes are known as the compartment of testes, as well as that is also known as the compartment of testes, as well as lobes of testicular. Lobes of testicular. Again, next question. Each lobes contain the, ध्यान दें वापस, फर्स्ट आउटरमोस्ट रीजन दैट इज द सेक्रोटम. सेक्रोटम के बाद में इसमें 250 लोब्स रहेगा, लोब्यूल्स कह सकते हो. दीज 250 लोब्यूल्स also known as the compartment or testicular lobes also, and each lobules contain the specific structure that have contain 1 to 3 highly coiled tubules, and these tubules are known as the semiferous tubules. Semiferous tubules. Just we will discuss later, but one thing is there, scrotum region. After that scrotum region, another innermost part, that is the 250 lobules, and 250 lobules to each lobules contain 1 to 3 semiferous tubules. And now this time we have discussed particular one part. What that part is there, then your answer. Each part just contain 1 to 3 tubules, and they have contain the 2 special type of the cells. How much type of cells? 2 special type of cells. So one thing is there. In that 2 special type of cells में first spermatogonia, that is the innermost lining of the semiferous tubules. Semiferous tubules की innermost lining layer होगी, उसको spermatogonia बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? Spermatogonia. और स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्म की मदर सेल होती है. यहाँ पर आपके पास में स्पर्म की मदर सेल होगी, जो आगे जाकर के स्पर्म बनाएगा बाय द मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन से स्पर्म बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया.
और सेकंड सेमीफेरस ट्यूबल्स के साथ में एक और सेल रहती है, दैट सेल इज नाउन एज द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल मीन्स व्हाट? A cell which have provide the nutrition. Sertoli cell, Sertoli cell provide the nutrition for the developing of sperm. डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का जो काम करती है वो आपके पास में सर्टोली सेल करती है। और द सर्टोली सेल also known as the nurse cell. Nurse cell, nurse cell, why that is known as the nurse cell? Because that cell have provided the nutrition for the developing sperm. So semiferous tubules have the two special type of cell. One is the spermatogonia, आपके पास में ये इनर मोस्ट लाइनिंग की सेल रहेगी इनसाइड की, और सर्टोली होगी वो आउटसाइड की सेल रहेगी, और वो इस स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। दैट्स व्हाई दैट इज द नर्स सेल। सेमीफेरस जो ट्यूबल्स होती है उस सेमीफेरस ट्यूबल्स के बीच में स्पेस होता है। दैट स्पेस, सेमीफेरस ट्यूबुलर स्पेस इज नाउन एज द इंटरटेस्टियल स्पेस। इंटरटेस्टियल space, as well as that intertestial space also known as the leading cell. What type of cell? Noted, leading cell. A leading cell, those cells which have provide the release or the secret the male hormone. What type of hormone? Male hormone. And that male hormone is known as the androgen, as well as that is also known as the testosterone. Testi से बना testosterone, that is responsible for the secondary sexual character in male. Whatever type of secondary sexual character will be there, that all these type of secondary sexual character which will be regulated as well as spermatogenesis process is generally induced by the testosterone. So that is the structure of semiferous tubules. Just go through the semiferous tubules. Diagram is there, or in your textbook also that diagram will be there, or in the CBSE exam some that question will be there. That is the again the particular structure, that is the part of test tube. ये एक आपके पास में टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के ही इस टेस्ट ट्यूबल पार्ट के अंदर ही अपन जनरली इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। देखो यहाँ पर आपके पास में साफ है, ये सारे लोब्यूल्स हैं, साफ लिखा है लोब्यूल्स है। हर लोब्यूल्स के अंदर, हर लोब्यूल्स में 1 2 3 सेमीफेरस ट्यूबल्स होगी। एक सेमीफेरस ट्यूबल्स में 2 सेल होगी, एक सर्टोली सेल और एक स्पर्मेटोगोनिया सेल, और उनके बीच में जो ये स्पेस मिल रहा है वो स्पेस होता है लीडिंग सेल, और जो आपके मेल हार्मोन को सीक्रेट करता है। फिर इनसे जो जितने भी पार्ट रिलीज हो रहे हैं ये सारे आकर के, हर एक आकर के एक पर्टिकुलर पार्ट में वहाँ रेटेड टेस्टिज बोलेंगे। ये सब अपने आप में कंपार्टमेंट एक रेटेड टेस्टिज हो जाएगा, और रेटेड टेस्टिज मिलकर के आपके वास एफ्रेंशिया में खोलेगा। किसमें खोलेगा बोलो? वास एफ्रेंशिया। और जो वास एफ्रेंशिया है वो वास एफ्रेंशिया खोलेगा, वो आगे जाकर के आपके पास में सारी वास एफ्रेंशिया यहाँ से सारी वास एफ्रेंशिया आकर के बाहर जिस स्ट्रक्चर में खोलेगी वो स्ट्रक्चर इसके ऊपर जो पूरी बनी हुई है दैट इज नाउन एज द एपिडाइडिमिस। क्या बोलेंगे उसको? एपिडाइडिमिस। सेमीफेरस ट्यूबल्स का डायग्राम है किसी में, जस्ट आगे शो करो। देखो इसमें आपके पास में 3 लोब्स बने हुए, वो बताओ। इन केस ऑफ सेमीफेरस ट्यूबल्स में 3 टाइप की सेल रहेगी, 2 टाइप की सेल रहेगी, और उनके बीच में स्पेस रहेगा। और जो 2 टाइप की सेल होगी उन सेल को चेक करें। उन सेल में आपके पास में सर्टोली सेल है और स्पर्मेटोगोनिया सेल है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो कंपार्टमेंट आ जाएगा वो आपके पास में एक लीडिंग सेल आ जाएगी। अब अपने पास में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है, जो टेस्टिस था उस टेस्टिस के अंदर आपका सीक्वेंस यूँ रहा था। सबसे पहले था रेटेड टेस्टिस। जो रेटेड टेस्टिस था वो रेटेड टेस्टिस में सेमीफेरस ट्यूबल्स थी। कौन सी थी बताओ? सेमीफेरस ट्यूबल्स। और एक सेमीफेरस ट्यूबल्स में नियर बाई 1 to 2 सेल थी, और सेमीफेरस ट्यूबल्स है वो आपके 1 to 3 कॉइल ट्यूब से बनी थी, और 2 इसमें टाइप की सेल है, 2 टाइप्स की सेल्स है। और उन सेल्स में 2 टाइप की सेल कौन हुई? एक तो हो गई आपके पास में स्पर्मेटोगोनिया सेल हुई,
और एक आपके पास में हो गई कौन सी, सर्टोली सेल या नर्व सेल कह सकते हो। ये तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी, ये स्पर्म बनाएगी। इन सेल सेमीफेरस ट्यूबल्स के बीच में जो स्पेस होगा, जैसे ये स्ट्रक्चर यूं है, आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो। बोर्ड में सीबीएसई में ये एग्जाम कई बार आ चुका है, डायग्राम आता है, उसको लेबल करना होता है ABCD के और उनके फंक्शन लिखने होते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ चुका है। तो इनमें आपको सारी आइडेंटिफाई करनी, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल सब। और ये इसके बीच में जो स्पेस है वो पूरा का पूरा आपके पास में एक सेमीफेरस और दूसरा यहाँ पर सेमीफेरस, ये वाला जो स्पेस है दैट स्पेस इज नाउन एज द सेमीफेरस ट्यूबल्स है। और ये आपके पास में इनके बीच में जो गैप रहेगा वो लीडिंग सेल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या था, रेटे टेस्टिज। रेटे टेस्टिज जाकर के जिस स्ट्रक्चर में खुलेंगे, वो रेटे टेस्टिज जाकर के जिस स्ट्रक्चर में भी खुलता है उसको हम बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। बोलो क्या बोलेंगे, इफ्रेंशिया। और वास इफ्रेंशिया जितने भी ये सारी कंबाइंड होकर के एक स्ट्रक्चर में खुलती है, दैट इज द एपिडाइडिमिस। अब ध्यान रखना है, जैसे ये आपके पास में टेस्टिज है, सपोज करो इस टेस्टिज के ऊपर इस टाइप से एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, नियर बाई 6 to 7 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाती है, दैट इज नॉन एज द एपिडाइडिमिस। जो टेस्टिज से स्पर्म बनता है, एक तो स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए और एक इनके मोबिलिटी के लिए, यानी मोबिलिटी और मैच्योरेशन, स्टोरेज और जितना हो सकता है इससे आपके पास में उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चेक करो, मैच्योरेशन, मोबिलिटी, स्टोरेज और न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे कंटेंट फंक्शन करता है एपिडाइडिमिस। ये टेस्टिज है, टेस्टिज के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनती है वही जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स है वही एपिडाइडिमिस कहलाती है, ठीक है। और यहाँ हर एपिडाइडिमिस से एक फिर ट्यूब निकलती है ऐसे, और इस ट्यूब का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, और इस ट्यूब को हम बोलेंगे वास डिफरेंशिया। डिफरेंशिया मतलब बहुत दूर लेके जा रही है, और इफ्रेंशिया का मतलब टेस्टिस के अंदर ही है, रेटे टेस्टिस के साथ है वो इफ्रेंशिया, और टेस्टिस से बाहर है एक ट्यूब है वो है डिफरेंशिया। तो ये डिफरेंशिया आएगा, और ये स्ट्रक्चर आकर के आगे जिस पर्टिकुलर पार्ट में ओपन हो जाएगी वो पार्ट हो जाएगा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल होता है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है, द पर्टिकुलर दैट पार्ट हाउ सीक्रेट द स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स provide the nutrition for the developing sperm, as well as that has one more, the sugar will be there, there is the sucrose, only the sucrose which will be released by the seminal vesicle in male, otherwise sucrose is the plant sugar. So whatever type of rape test or the whatever type of test will be there, why that test will be conducted with the help of secretory part of the seminal vesicle. Seminal vesicle एक secretory duct भी है, ध्यान दें। नेक्स्ट केस, इसी से आपके सेमिनल वेसिकल से एक स्ट्रक्चर निकलेगी और दूसरी स्ट्रक्चर जो साथ में रिलीज होगी उसको अपन आपके पास में इजेक्टरी ट्यूब कहेंगे। सेमिनल वेसिकल और आपके पास में वास इफ्रेंशिया की कंबाइंड जो स्ट्रक्चर रिलीज होगी उसको इजेक्टरी ट्यूब्स कहेंगे। इसी इजेक्टरी ट्यूब के साथ दो और स्ट्रक्चर चेक करनी होगी आपको। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, डायग्राम में पहले मैंने जो किया था वहाँ पर आपने ध्यान दिया हो, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एक वाइट फ्लूइड को सीक्रेट करती है। दैट वाइट फ्लूइड हैव प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म एज वेल एज फ्लूइडिटी ऑफ स्पर्म और मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म। वन मोर थिंग, द व्हाटएवर टाइप ऑफ सीमन विल बी देयर, द सीमन इज द टू कंटेंट, वन इज द स्पर्म अनदर इज द फ्लूइड। तो जो सीमन होता है उस सीमन का 60 to 70% पार्ट ओनली और ओनली ड्यू टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। Or by the increasing of age, at the old age, the really what will be happen, here is the simple phenomena will be there. That phenomena is the prostate size will be increased. That's why by the surgical process that can be operated will be another option is there. And last thing, that Cowper gland will be there. That Cowper gland, which have again one more thing is there, that Cowper gland release a mucus before the intercourse.
यानी मेल और फीमेल जिस समय सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं उससे पहले एक म्यूकस स्ट्रक्चर रिलीज होती है, फ्लूइड रिलीज होता है. दैट फ्लूइड इज रिलीज बाय द काउपर ग्लैंड एज वेल एज bulbourethral gland. Bulbourethral gland. In case of bulbourethral gland, that have two function is there. Number one, provide the basic medium for the transportation of sperm, and second function, they have just lubricant nature for the intercourse. So, and last part of the male reproductive system, that is the penis, that is the external genitalia, and that external genitalia outside of the body, a muscular organ, and their head will be there, and remaining part between the muscle to muscular part or spongy tissues, gap will be there. In that gap the blood can be filled during the excitation. When that can be becomes the excitation part, it can be becomes the erect, and after then releasing or the secretion of semen, then the blood is again transported in the blood vessels and they have the relaxed form is there. So definitely the male reproductive system, just you have learned as all these parts will be there. First, primary organ. In case of primary organ, there is the function or different structure will be there, that is the testes. Second, secondary or the accessory part will be there, secondary organ. And I have already discussed secondary organs are divided in two parts, one part ducts and second part glands. In case of the ducts में first rete testes, second vas efferentia, and third, after the vas efferentia, epididymis, and last vas differentia. Or in case of gland, first seminal vesicle, and third prostate gland, and next is the Cowper gland. सबके फंक्शन हो गए. ये म्यूकस सीक्रेट करेगा, एसिड सॉरी बेसिक मीडियम देगा और इंटरकोर्स को लुब्रिकेंट बनाएगा. ये आपके पास में सीमन का 60% हिस्सा होता है और न्यूट्रिशन भी देता है. सेमिनल वेसिकल स्पर्म को स्टोर भी करता है, न्यूट्रिशन भी देता है. और ये आपके पास में अदर पार्ट्स होंगे. और एक लास्ट थर्ड पार्ट द एक्सटर्नल जेनेटिया. External. In case of external genetia, there one thing is there, that is the penis. Structure of penis, head, and other region will be there. So that is the male reproductive system. Male reproductive system of human being. In case of male reproductive system, three parts: primary organ, secondary organ, external genetia. But definitely you have go through the each and every part and their function. Sometimes the question will be there. Suppose that part will we have removed the testes, what will be happen? We have removed the epididymis, what will be happen? At the vas differentia we have used the plastic tubes, then what will be happen? Suppose the penis is not there, what effect on the fertility or the reproductive part? Just all these type of the question. क्योंकि इनके जो फंक्शन है वो फंक्शन नहीं होंगे. यही आपका आंसर रहेगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. और स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है क्वेश्चन पे, वो एक तो देना आपके पास में टीएस ऑफ टेस्टिस पे जो आपके प्रैक्टिकल में भी है, और एक सेमीफेरस ट्यूबल्स के डायग्रामेटिक डायग्राम और उसके लेबल करने में इसमें ABCD करके क्वेश्चन आता है. डायग्राम दिया जाता है आपको CBSE में और उसको लेबल करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, उनके फंक्शन लिखने होते हैं. और कल हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक्स अ लॉट.